Assalamualaikum everyone. Thank you so much for tuning in into MedAngle's podcast. My name is Abdullah Bin Faisal and I'm a first year medical student at AKU. We have with us two very nice guests with us. We have Vikash Virvani, also a second year medical student at AKU, and we have Tushar Subhash, another first year medical student at AKU. Thank you so much for taking out time and coming here today. How are you guys doing? Yeah, we are good. Thank you for having us, Abdullah. I'm sure we're gonna have a nice discussion today. Inshallah, definitely. So we're gonna get right into our topic. Today we're gonna discuss about the AKU test that is literally just coming up in a very short while, and also how this year you're gonna have your NMDCAT exam right alongside your AKU test. So there isn't much difference left, and which is why it may have become a challenge for the applicants to prepare for the NMDCAT and the AKU test ek saath, likewise, in the remaining time. So talking about that, let us go ahead and let us see when is the AKU test and the NMDCAT as well. So the AKU test is gonna come up ideally on the 13th of August, as we already know, and so is the NMDCAT gonna come in the beginning of September. So before we go ahead and we talk about the AKU test, there is a little disclaimer for everybody that this podcast is the sole property of MedAngle, and we are in no way representing or affiliated with with AKU itself, and all the experiences that we share, everything that we talk about is basically based on our sole experience and nothing official. So moving ahead, let's first go ahead and let's talk about let's specifically talk about how to put the U in AKU. And talking about that, let's go ahead and see कि सबसे पहले लोगों की चूँकि एक मिसकंसेप्शन होती है कि AKU के टेस्ट है और NMDCAT है तो उसके लिए अलग-अलग तैयारी करनी पड़ेगी, which is why I've heard कि काफ़ी सारे लोग AKU का टेस्ट भी स्किप कर देते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम सिर्फ NMDCAT पे फोकस करें. तो विकाश, व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये एक मिसकंसेप्शन है कि दोनों के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है या वाकई ही ऐसा होता है? Yeah, so Abdullah, you're very right कि people are they do not know कि AKU टेस्ट कैसा है और MDCAT कैसा है, and there's a misconception कि लोग समझते हैं बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं और उनकी तैयारी अलग अलग करनी पड़ेगी, बट आई थिंक कि इट्स नॉट लाइक दैट. सो बेसिकली जो AKU का सिलेबस है, आई बिलीव कि इट्स फार मोर देन व्हाट द MDCAT syllabus is, right? And if you do well in the AKU test, I believe you are over prepared for the MDCAT, and that is why I think you should be preparing well for the AKU test, and whatever delays you have left after the AKU test, you could do specific preparation for MDCAT. And I believe the questions are different in both exams, but the syllabus is quite similar, and there's quite a bit of overlap between the two syllabuses. Definitely, and in fact, let's go ahead and talk about the exact difference between the MCQs of both the AKU test and the NMDCAT. In fact, all of us have given the test, and Tushar scored really well in his NMDCAT, like the both of us as well. But let's have Tushar go ahead and tell us about the difference that you think के उसके अंदर AKU test के अंदर और NMDCAT के अंदर जो MCQs आते हैं उनके दरमियान what do you think is the difference in the level of difficulty and the level of complexity, and about that. Alright, so basically there is a lot of difference between the NMDCAT and the AKU test, and before giving the AKU and NMDCAT test, I wasn't also aware of those. So first we will talk about the AKU test. As you might already know, now I'm gonna talk about it as well. The AKU test has MCQs that basically it tests you on 3 levels, as is also shown by its syllabus that you will find on its website. It's knowledge, understanding, and application. So you will find questions that you will find pictorial questions, you will find graphical questions, you will find basically all sorts of questions that basically are nerve-wracking, and they challenge you to think. They're not just के book की lines उठा के दे दी and they just want you to fill in the blanks. No, that's not what they are looking for. Talking about the NMDCAT test sideways, what I found in my NMDCAT test last year was that the questions that they have over there, वो ज़्यादातर मैंने देखा कि book के exact lines भी copied थी, and even or basically those questions were कि
या तो you know it या तो you don't. They didn't make you think about it, just like AKU test questions would. You didn't require time to do it. So अगर सामने आए and you know about it, you take it, and if you don't, there's no way, you बस तो कार्ड लगाना पड़ेगा. सही है. And बाकी जो AKU test, I just told you कि you have to think about it. You have to like visualize everything, make up things in your mind, and then you have to look. चार options होते हैं. There will always be one right option. You just gotta think about it. Absolutely, and I feel like that is the most important thing for both of them, but specifically for the AQ test कि आपके concepts बहुत ज़्यादा strong होने चाहिए, because book की lines कम ही आती हैं. इनफैक्ट कॉन्सेप्ट ज़्यादा टेस्ट होते हैं, बड़े घुमा फिरा के भी टेस्ट हो रहे होते हैं. सो एंड विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस आगे जाके भी, बट लेट्स डाइव इनटू द AKU टेस्ट नाउ, and let's start with the pattern, and then we can go ahead and talk individually about every single portion के what is our take on it कि हम कैसे तैयार करें. The AKU test pattern is very evident. Usually कभी कभार changes आते हैं, कुछ सालों पहले different changes आए थे, but इस साल जो है we're gonna have a pattern जिसके अंदर we're gonna have 5 different portions. हर portion 20 marks का होगा, और इनको compile करके 2 major categories बनाई जाएंगी. So one will be the sciences portion, और the sciences category जिसके अंदर biology, physics, chemistry होगा, and उसके अंदर 60 MCQs total होंगे. और दूसरी category होगी reasoning की, जिसके अंदर math reasoning और science reasoning होगा, and that will be of 40 MCQs in total. और इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए वी विल गेट 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे. तो इससे 100 मार्क्स टोटल, 100 MCQs, 120 मिनट्स. एंड फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पास बोथ द कैटेगरीज, द साइंसेस पोर्शन एंड द रीजनिंग पोर्शन इंडिविजुअली. पास करने का मतलब कट ऑफ मीट करके उसके बियॉन्ड जाना, और कट ऑफ के बारे में हम थोड़ी देर तक बात करते हैं. बट लेट्स गो ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअल पोर्शंस. तो साइंसेस जो है उसकी बात यह है कि हर सब्जेक्ट के 20 MCQs है. 20 MCQs का मतलब है चूँकि काफ़ी कम नंबर है, तो यू नीड टू परफॉर्म रियली वेल इन दैट. आपके पास इतना क्वेश्चन नहीं होगा कि अगर आप कुछ MCQs जो है वो गलत करो और कुछ छोड़ दो तो आप जो है वो बड़े आराम से आगे जा सकोगे. वी हैव टू बी रियली स्मार्ट अबाउट दैट. So how did you guys prepare? Let's start from Vikash, and why don't you go ahead and tell us? Let's start from biology. So how do you think students should approach biology, and what is your take on it, and how would you go about it? Right. So Abdullah, what I did was I started off with federal books. Federal board की किताबें I think are really nice for the AKU test, and if you follow the syllabus that is available on the AKU website, it's quite similar to the content that is given in the federal board books, right? So the recommended book I believe would be the federal board book for the AKU test, specifically the biology portion, right? Apart from that, if you are looking for good questions to practice, I believe what I did was I practiced from the SAT to subject test books. I just did the questions from there, not the books. So I did the content from the federal board books and the practice from the SAT to subject test books. All right, that definitely makes sense. And did you use some resources like searching up videos on YouTube for concepts, or maybe referring to your own notes that you made sometime in your A-levels or your FSC for that matter, because we have a lot of number of applicants from either system. So did you refer to those, and what resource do you think specifically about biology जो कि कम टाइम लेती है और ज़्यादा yield कर सकती है? Is it the SAT books, is it the FSC books, or something else that you have in mind? Yeah, so if you're looking for something that would have the most impact in terms of if you want to give it less time and you need more impact, so I believe doing the SAT books would be the best thing to go about. I believe the SAT syllabus is quite similar, or I would say basically it's the overlap between the A-level syllabus and the syllabus that the AKU test has. So I believe SATs doing right now would be the best thing to do, but if you have time, federal board books definitely have more content, more detail, and that's the best, that's the ideal thing to do right now. And apart from that, yes, I did use a lot of YouTube videos. I don't have a specific
channel or videos to recommend, but yes, I use a lot of videos to supplement the book knowledge. Yeah. Definitely, surely. That being said, I think that is pretty much for biology. I think biology is a subject that requires a lot of self-study as well. Because जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, because there's a lot to retain, a lot to memorize, तो उसमें टाइम काफ़ी लगेगा. If we go ahead and if we talk about specific portions, जैसे in biology, for example, kingdoms का chapter है या कुछ ऐसे chapters हैं that require a lot of time. So how do you think we should go about it? क्या हम जो बहुत detailed और बहुत ज़्यादा content wise बहुत lengthy chapters है, क्या हम वो पहले करें या हम वो पहले करें जो कि हमें easy लगते हैं? What is your take on that? You specifically talk about the chapter kingdoms, and Animalia Kingdom is at times the most assessed chapter on the AQ test, as Abdullah Bin Faisal will also agree on. Chapters like this, and not just in biology but also in chemistry and physics, I would recommend कि जो ये chapters होते हैं, they need more memorization, right? So just flow charts would be a great help to tackling such chapters. And again, the resources that Vikash just talked about, they are the perfect fit for such chapters. And talking about which chapters to focus on, I would say that the chapters that require you to make concept, that require you to make think about it, I would recommend कि you do those first, because याद तो बाद में भी हो सकते हैं. So but make sure you give sufficient time to chapters like Kingdom, Animalia, because again I would just again emphasize on that कि वो बहुत ज़्यादा important chapter है. Depends on your luck. So yeah. And also in chemistry and physics, my suggestion would also be the same कि वैसे तो chemistry second year में almost सारी chapters ऐसे हैं that require you to make concepts, right? And also a pro tip would be कि start with those chapters that you are not familiar with या that you hate the most. I hated inorganic chemistry a lot, and मैंने फिर वहीं से शुरू किया था because questions वहीं से भी अच्छे खासे आए थे. अच्छा, so let's go ahead and, as you also mentioned, let's go and talk about chemistry and physics in detail as well. I believe कि chemistry एक ऐसा portion है, एक ऐसा subject है जिसके लिए I've seen people get face a lot of challenges, because people keep asking कि हम कौन सा section ज़्यादा focus करें, हम organic पे करें, inorganic पे करें, physical पे करें, क्या किया जाए इसके बारे में. And I've seen कि A level के जो students जो है वो shift होते हैं MDCAT की तैयारी और AKU के test की तैयारी के लिए. They face challenges because वो वहाँ पे एक different naming system पढ़े होते हैं, वो वहाँ पे एक different वो reactions के नाम नहीं याद कर रहे होते वहाँ पे. तो ये चीज़ है. तो what do you think कि chemistry के लिए जो है वो क्या उसमें federal books पढ़ना, federal board की book पढ़ना उतनी ही important है, या क्या A level के book से भी काम चल सकता है? So what is your approach on chemistry specifically? Yeah, so Abdullah, we used to do a lot of organic chemistry in A levels, but I still think the amount of detail and the amount of stuff that we cover in A levels is still less that has to be covered. So I would still prefer कि अगर time है तो go for FSC books, and if you don't have time तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर you know have to go with A levels and SAT. लेकिन I still I say कि FSC books करना लाजमी है, as with biology तो chemistry में भी करना ज़रूरी है. बिल्कुल सही हो गया. And I personally believe कि time is a big problem for everybody. अगर time है तो go ahead, definitely do all of that. लेकिन I would prioritize biology above के उस पे तो you really have to study FSC की books because a lot of chapters have been skipped out. So अच्छा, physics की बात कर लेते हैं. Physics is another challenging subject क्योंकि first of all फिज़िक्स किसी को पसंद नहीं है, एंड दूसरा ये कि हमें पता नहीं चलता कि हमें तो पता है बट एप्लीकेंट्स को नहीं पता कि कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं या कितने जो है वो डायरेक्ट बुक की लाइंस उठा के जो है वो दी होती है. फॉर एग्जांपल मेरे और तुषार के टाइम पे एक क्वेश्चन आया था कि आइंस्टाइन को जो है वो नोबेल प्राइज़ किस चीज़ पे मिला, तो अब दैट वाज एन एग्जैक्ट बुक लाइन जो कि उन्होंने उठा के दी थी. बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स दैट कम इन एज वेल. So it's a kind of a mixture of both. But if you, Tushar, you want to go ahead and talk specifically कि chemistry की तैयारी कैसी की जाए, क्या resources use की जाए, and how would you go about it?
I very much agree on the part कि you never know कि numerical ज़्यादा आएंगे या factual question ज़्यादा आएंगे, and the Einstein question really recalls some great memories, actually डरावनी memories. So I would what I did शुरू से ही, even first year के शुरू से ही, I just stick to Punjab board book, and although in the end I felt like कि मुझे और books को refer करना चाहिए था, but I felt उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी. But Punjab board book I would say कि teaches you almost everything that the test would assess you on, right? There are some questions, there were actually some questions हमारे साल में, मेरे और अब्दुल्ला के साल में, that were being an AQB student, yeah, others being an FSC student, Sindh board student, Punjab board student, they weren't really able to solve such questions, and those were actually numerical questions and questions that you would only expect an A-level student to easily actually easily solve such questions. So we really weren't able to tackle such questions. So best the one thing that you can do about those would be to go through A-level books. The A-level books में ऐसे concept भी they would test you that resemble those that AQ will test you on, and eventually if you happen to also practice red spot की physics, though it also has great questions. I wouldn't say कि red spot की physics 100% relevant है, because there were also such questions that you shouldn't be spending time on, because वो कभी भी नहीं आते ना AQ में ना NMDCAT test में. So just in the red spot book aim for the questions that you think are relevant. Just हर question ना करने बैठ जाना, क्योंकि it's not 100% relevant. All right. And physics का तो I guess that's a lot, and that's pretty much it. Use the resources that are more relevant. And I've seen students जो कि sciences के लिए specifically बहुत पहले international resources पे चले जाते हैं and start doing that. I think we need to focus and prioritize के जो resources हमारी readily accessible है और ज़्यादा relevant है उनसे start करें, और फिर then if you think वो आपने सब कर लिया है, then you can go above and beyond and do other resources that you find, but एक ऐसे आप priority अपनी set कर लें. So that is it for sciences. We can go ahead and we can talk about the reasoning portion now. Math reasoning or science reasoning both. So I personally believe कि math reasoning के लिए, क्योंकि people have this misconception कि आपको A levels और FSC में आपने मैथ्स पढ़ा होना चाहिए या आपको मैथ्स बहुत अच्छा आना चाहिए. I disagree with that. I believe कि अगर मैट्रिक और O levels में भी किसी ने अच्छी तरह मैथ्स कर लिया था, they might not even need to go through all the concepts again. एक दफ़ा रिवाइज कर ले और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो they're good to go. But what do you think, विकास, के मैथ रीजनिंग के लिए किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? What do you say? So Abdullah, I being a student of O levels did not face a lot of challenge when doing the maths questions, and that is because most of the stuff that is tested in the AKU maths portion is from O levels or the SAT syllabus. So I believe as you said earlier कि SATs अगर कर लिए हैं, SAT 1 और O levels या मैट्रिक की मैथ्स पढ़ ली अच्छे से, तो I believe you should spend more time on practicing, or practicing is as important as studying. So yeah. All right. And we'll go ahead and we'll talk about science portion as well. एक चीज़ मुझे याद आती है कि I remember that a lot of my batchmates told me that they went ahead and they practiced questions like kangaroo math questions and other math questions that they find in math Olympiads that happen. आई थिंक है कोई ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे टेस्ट कर रहे हो और प्रॉब्लम्स दे रहे हो, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को टेस्ट कर रहे हो, तो आई थिंक दे कैन वर्क एंड दे कैन हेल्प यू प्रैक्टिस योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस इज़ अ मेजर चंक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चंक ऑफ एटलीस्ट योर रीजनिंग पोर्शंस. अच्छा, इसके बाद साइंस रीजनिंग आ जाती है. आई बिलीव दैट साइंस रीजनिंग इसका काफ़ी पैटर्न भी चेंज होता रहा है ओवर द ईयर्स. पहले पैसेज बेस्ड पैटर्न होता था, अब ज़रा थोड़ा नॉट पैटर्न पैसेज बेस्ड बट रादर मोर ऑफ द पैटर्न ऑफ लॉजिकल रीजनिंग फ्रॉम योर NMDCAT. तो आई थिंक ये काफ़ी रेलिवेंट है. इनफैक्ट अब मुझे याद आ रहा है दैट at my time, in fact, because मैं भी काफ़ी confused था because I could not find the right questions to practice, and I believe कि मुझे personally experience हुआ था कि जो हमने MedAngle पे especially science reasoning के questions किए थे, they were very relevant to what came in the test, and I believe कि they cover the concepts really well. बाकी what resources did you use, Tushar, and how do you think we should approach this
part of the test? अच्छा, so science reasoning एक वाहिद पोर्शन है that no education board perfectly prepares you for, right? And उसकी कोई खास बुक भी नहीं है. It's more logical, it's more questions that test your concepts. And what I did was कि mostly I attempted the questions in the moment. And really वो questions ऐसे होंगे that you कोई भी बायो का या केमिस्ट्री का या फिज़िक्स का फॉर्मूला एज सच नहीं चाहिए होगा. यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट दोज एंड आई एम प्रीटी श्योर यू वुड बी एबल टू क्रैक मोस्ट ऑफ दैम बिकॉज रियली अगेन इट्स जस्ट लॉजिकल. एंड आई MedAngle की जो वेबसाइट है premedical.pk, उस बात से मुझे याद भी आया कि जस्ट अ फ्यू एक्चुअली जस्ट अ वीक बिफोर माई AKU टेस्ट premedical.pk लॉन्च इट्स मॉक एग्जाम्स. एंड आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस मोर कि जो उसका जो साइंस रीजनिंग का पार्ट था मैंने उसको अटैम्प्ट किया. एंड देन व्हेन आई सेट फॉर द एक्चुअल AKU टेस्ट आई रिकॉल कि उसके अच्छे खासे क्वेश्चन रिजेंबल करे थे. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इफ़ यू अटैम्प्ट द मॉक एग्जाम दैट वी हैव सेट आउट फॉर यू एज वेल, these will give you a better insight, actually a greater insight of the actual AKU and T-test. बिल्कुल सही हो गया. So we have actually covered all the individual portions. So now we can go and we can sort of mention कि एक तो ये कि क्या और generalized resources हो सकती हैं. For example, तुषार mentioned रेड स्पॉट के practice questions I believe के काफ़ी help करते हैं. 100% obviously relevant नहीं है but काफ़ी हद तक आपकी practice हो जाती है. And बाकी हमने books mention की, SAT की books का हमने जिक्र कर लिया. इसके अलावा आई डोंट बिलीव हमने कुछ स्किप किया. देयर हैव बिन अदर रिसोर्सेज जो ओवर द ईयर्स पहले काफ़ी हेल्पफुल थी. फॉर एग्जांपल थिंकिंग स्किल्स जो सब्जेक्ट ए लेवल्स का, उसके क्वेश्चंस पहले काफ़ी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते थे बट अब पैटर्न थोड़ा शिफ्ट हो गया है. तो आई डोंट थिंक दैट इज़ रेलिवेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो दीज वर द रिसोर्सेज. नाउ लेट्स गो ऑन एंड लेट्स सी के और क्या क्या चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ दिस फिनोमेना अबाउट कट ऑफ्स. और ये बड़ा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमें AKU का टेस्ट पास करना है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम 50% क्रॉस करके पास हो जाएंगे या हम जो है वो कि क्या स्कोर करें, हम कैसे पास करें. तो एक्चुअल में होता ये है कि हर साल AKU क्या करता है कि वो कोई 300 to 350 स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करता है फ्रॉम द टेस्ट. तो फॉर एग्जांपल इस साल जो है वो टेस्ट के अंदर अगर 7500 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं तो 350 शॉर्ट लिस्ट हुए, तो जो 350th स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे वो कट ऑफ वाले मार्क्स बन जाएंगे. यानी उससे नीचे जो स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए और वो वाले मार्क्स और उससे ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उन सब ने वो टेस्ट क्लियर कर लिया. तो ये होता है बेसिकली. और ये कट ऑफ बहुत वेरिएबल है. हमारे टाइम पे इट वाज 57% फॉर द साइंसेस पोर्शन एंड 60% फॉर द रीजनिंग पोर्शन. बट आई बिलीव आपके टाइम पे थोड़ा ज़्यादा था. Yeah, so हमारे टाइम पे it was 70% in the sciences portion and 74% in the reasoning portion. So it varies a lot and it depends on a lot of factors. Let's say questions कितने मुश्किल आए थे या कितना टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए या a lot of factors that pitch in. तो it varies a lot. बिल्कुल सही हो गया. एंड टॉकिंग अबाउट दैट आई बिलीव कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर ये भी आता है, टॉकिंग अबाउट द टेस्ट स्पेसिफिकली, कि टेस्ट को अटैम्प्ट किस तरीके से किया जाए. बिकॉज कुछ छोटी मोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल द नेगेटिव मार्किंग कॉन्सेप्ट जो लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है. तो हाउ डिड यू गो अबाउट द टेस्ट एंड हाउ डिड यू अटेम्प्ट इट, तुषार? एंड व्हाट डू यू थिंक कि कोई हमें जैसे फॉर एग्जांपल रीजनिंग पहले तो नहीं करना चाहिए या हमें साइंसेस पहले करना चाहिए? हाउ डिड यू गो अबाउट द टेस्ट? So this is more of a thing that you should decide, right? ये नहीं कि किसी एक बंदे ने, for example, I talk about such a pattern and you follow the exact pattern and it's not sure कि it would work for you. So it just depends कि what your pattern is, right? I would say, actually talking about my opinion first, what I did was I just went with the pattern that I was provided the exam in. So I believe that was biology, then chemistry, then physics, and then eventually maths reasoning and science reasoning. And
that isn't necessary that you follow the exact same order. Just go with the subject that you think you would need more time on, ताकि वो पहले कर लो, because of course AKU test, as you already know and as Abdullah already talked about, you would have 120 minutes for these and about 100 MCQs. So roughly you would get almost one minute for each MCQ, and that's the best way to go about it as well. So just go with the the component that you think you would need more time, you would need to invest more time in, and usko pehle attempt karo. And then also talking about the negative marking aspect that Abdullah also mentioned. So negative marking, there is 3 components: biology, chemistry and physics, basically the 3 sciences, और उसमें negative marking होती है. Now what it means is when you get an MCQ wrong in any of these 3 components, you just don't lose 1 mark, you lose an additional 0.25 marks. So that would be about 1.25 marks each MCQ that you get wrong. So what I did was when I was attempting the sciences portion, and if I found anything, any MCQ nerve-wracking or anything that needed me to invest more time on, anything that I felt like I could get wrong, I kept it for the very end, and I just moved on to the science reasoning portion, that is math reasoning and science reasoning. And because math reasoning and science reasoning में negative marking होती ही नहीं है, so I would suggest that is something you should do, you just attempt all 20 MCQs of actually 40 MCQs of those, because you wouldn't have any negative marking on those. Talking about the sciences portion, क्योंकि negative marking होती है, and I vividly remember कि I was told about this as well. क्योंकि negative marking होती है, the best thing would be to narrow down a list of basically MCQs that you feel like there is a high probability you can get wrong, and just leave them blank. I remember कि मैंने भी 5 to 10 MCQs छोड़े थे, because I felt like I am gonna get them wrong, because I didn't know what they were asking me. So negative marking का ये है कि please don't try to be over efficient and attempt all 100 MCQs. Although if you feel like you have a good grip on those, attempt the 100 MCQs, but if you feel like you can get a rough amount of those wrong, just leave those blank, because negative marking की वजह से your overall percentage बहुत अच्छी खासी drop हो जाती है, as my friends also told me. बिल्कुल सही हो गया. दैट इज़ अ वेरी डिटेल्ड पर्सपेक्टिव ऑन नेगेटिव मार्किंग. आई बिलीव कि आप लोग सब इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे, एंड यू कैन गो ओवर इट प्रॉपरली. सो I guess negative marking के बारे में that was a very detailed perspective, but let's see what does Vikash have to say about attempting the test, and how do you think we should go about attempting all the portions? So Abdullah, as Tushar said, there is no fixed pattern or no ideal pattern to go about, and everybody has their own way to do, and I'll tell you what I did. So when you are studying in the exam, the goal should be to score the maximum marks you can. It doesn't matter if you did the hard questions right or you scored well in the easy ones. Every question has the equal amount of weightage, so it's better to score well by attempting the easier ones first, and then you move on to the harder ones. So if there's any question which you think needs more time or more thinking, so you could leave it for the end and you could come to it in the end. So that's how I used to attempt the AQ test. What I did was I started with the first portion that came, and I started doing the questions, और जो आसान थे मैंने वो कर लिए. उसके बाद फिर जो जैसे जैसे मुश्किल questions आ रहे थे, तो if I was able to do it in 1 minute तो मैं कर लेता था. If I wasn't able to do it तो मैं छोड़ देता था उस वक्त. ठीक है, तो it's smart enough कि आप easy questions पहले करें, क्योंकि you have to save your marks जो आपको आते हैं. जो आपको stuff आता है वो पहले आप secure कर लो marks, ठीक है, और जो मुश्किल है उनको बाद के लिए छोड़ दो. उससे होगा ये कि अगर आप मुश्किल सवाल पे टाइम ज़ाया करते हो और उससे इवेंचुअली हो जाता है 5 मिनट लगाए 10 मिनट लगाए एक हो गया, तो आपने एक सवाल से एक ही मार्क उठाया,
और जो उसके बाद आपने जो 10 आसान सवाल छोड़ दिए वो आपके 10 नंबर ज़ाया हो गए, यू नो। तो इट्स नॉट स्मार्ट कि आप एक ही सवाल पे टाइम ज़ाया करते रहो काफ़ी ज़्यादा। सो या दैट्स हाउ आई डिड द एग्ज़ाम। और एज़ तुषार सेड, नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफ़ी स्कोर लूज़ होता है। तो साइंस पोर्शन में इट इज़ रिकमेंडेड कि इफ़ यू कैन नॉट शॉर्ट लिस्ट द ऑप्शंस टू 2 और 3 ऑप्शंस तो उसको छोड़ दो अगर नहीं कर सकते तो। लेकिन जो रीजनिंग पोर्शन है, इट्स रिकमेंडेड कि यू डू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू नो द क्वेश्चन और नॉट। ऑल राइट। बिल्कुल सही हो गया। आई थिंक दैट इज़ अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स फॉर द व्यूअर्स टू नो के किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट किया जा सकता है। अलबत्ता दिस वन थिंग आई हैव नोटिस्ड कि समटाइम्स क्या होता है, आप जैसे ऑल ऑफ यू सेड कि इन केस अगर आप हर क्वेश्चन को पहली दफ़ा में अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो एट द एंड आप पहुंचोगे रीजनिंग पोर्शन पे और टाइम कम रह जाएगा काफ़ी। तो कुछ लोग कम टाइम को देके थोड़ा पैनिक होना स्टार्ट कर देते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इन यू लूजिंग द पीस ऑफ योर माइंड, और फिर आप प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाते, रीजनिंग नहीं कर पाते उन क्वेश्चंस के साथ। तो आई थिंक इट्स वे बेटर, जैसे ऑल ऑफ अस मेंशन, कि do all the questions you can easily do in the first go and then go another give it another go or maybe 2 more goes and do the questions that you can and figure out कि कौन से आप छोड़ रहे हो या कौन से आप you're taking your chances on them. तो that was it talking about test. एक जिस तरह मैंने ये mention कि इसी तरीके से there's a lot of factors that affect your stress that you have before the test, during even after the test. तो पर्सनली फॉर मी आई बिलीव के अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपना जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं उसको किसी चीज़ के साथ एफिलिएट ना कर ले। फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल गेट एडिक्टेड टू कैफीन इन देयर फाइनल डेज। वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय की इंटेक कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का स्लीपिंग साइकिल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, वो दिन के 2-2, 3-3 बजे तक सो रहे होते हैं और सारी रात जाग रहे होते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ जो है वो फेस होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो आई बिलीव दैट यू नो वी नीड टू मैनेज ऑल ऑफ दैट वेरी वेल। उसके बजाय हम ऐसी चीज़ों के साथ एफिलिएट करें कि वी गो टॉक टू आवर लव्ड वंस, आवर फैमिली, अपने भाई बहनों से बातचीत करें, दोस्तों से बात करें, यू नो व्हेन एवर वी टेक अ ब्रेक, ताकि हम हेल्दीली अपना स्ट्रेस मैनेज कर रहे हो। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट एंड तक। आई बिलीव टेस्ट के दौरान भी आई बिलीव के काफ़ी स्टूडेंट्स बड़ी जल्दी इंटिमिडेट हो जाते हैं व्हेन दे सी अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स अराउंड देम, सब बहुत तैयारी करके आए हैं तब बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो दरमियान वी हैव टू मेंटेन अ वेरी पीस एंड कंटेंट माइंड एंड आफ्टर द टेस्ट इवन, क्योंकि यूजुअली द टेस्ट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स और लोगों को ये लगता है कि हमारा तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, विच इज़ प्रीटी कॉमन। हर किसी को ऑलमोस्ट यही लग रहा होता है कि दे डिड नॉट डू अ वेरी गुड they did not do very good at the AKU test, which is totally fine. You just need to quickly shift your focus on the NMDCAT. So I believe that is very important. We don't really have a lot of time breaks लेने के लिए. So how do you think students can shift their focus quickly to the NMDCAT after the AKU test? कि किस तरीके से वो क्या उसी पैटर्न पे चलते रहे या जो है वो अब FSC की बुक्स पे ज़्यादा फोकस ले आए अपना, और क्या उनको अब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज आफ्टर द AKU टेस्ट वी हैव वेरी फ्यू डेज लेफ्ट, फिर NMDCAT स्टार्ट हो जाएगा। सो अब्दुल्ला, आई बिलीव के एज यू सेड कि हमारे पास AKU टेस्ट के बाद हार्डली वी हैव अ वीक और 2 and I believe it's better to focus on the type of questions that appear in the MDCAT. As we discussed earlier, MDCAT के questions different हैं, AKU test के different हैं, तो you just need to so you're already prepared with the content, with the syllabus, and I think there are hardly 2 or 3 chapters जो कि आपको करने पड़ेंगे अलग से MDCAT के लिए. So you know you are done with the syllabus or at least most of the syllabus. Now what you have to do is to practice questions that are relevant to the MDCAT. और उसके लिए हमारे पास बहुत सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. So yeah, I think testing is something that you should be focusing on, and not just doing questions but learning from them. अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है या इवन ठीक भी होता है तो उसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ें, उसको उस एक्सप्लेनेशन से कुछ सीखें. That's how you learn from the questions. सिर्फ ये नहीं है कि अगर मैंने 2000 क्वेश्चन कर लिए, 3000 क्वेश्चन कर लिए, इट डज़ नॉट मैटर कि तो आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं. इट्स हाउ यू यूज़ दोज क्वेश्चंस टू लर्न बेसिकली. तो इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट इफ़ यू डिड देम करेक्टली, आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स. अच्छा, इससे आगे चलते हैं और अब ये बात करते हैं कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स आस्क दिस क्वेश्चन के
आप जो है वो मेडिकल कॉलेज में हैं, तो आप बताएं कि आपका स्केड्यूल क्या था तैयारी का टेस्ट्स की, और आप हमें बताएं कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे. तो तुषार, व्हाट वुड बी योर अप्रोच कि अगर कोई पूछता है तो उसको किस तरह समझाना चाहिए, या क्या एग्जैक्टली आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का कि अगर कोई पूछता है. So again, schedule वही चीज़ है कि it is not important कि जो दूसरे कह रहे हैं, you also adjust your routine, your schedule according to what theirs are, right? So I remember कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी थे जो सुबह कुछ 6 बजे से उठ के पढ़ते थे, and they used to study till night almost 10 p.m. and then again there were those जो 12-1 बजे उठ के रात को देर तक पढ़ते थे. Again, all of them made it to the finish line, that is all of them made it into AKU. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका शेड्यूल क्या है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं. दिन में 2 घंटे पढ़ने वाला भी AKU में पढ़ रहा है आज, और दिन में 10 घंटे पढ़ने वाला भी AKU में पढ़ रहा है आज. एंड Abdullah will also agree on that. So yeah, it is really dependent upon you कि what you are satisfied with. If you feel like कि a minimum amount इतना है, इतने घंटे आपको देने चाहिए, and you feel like that satisfied, that takes off basically everything, then just go with that. ये नहीं कि कोई बंदा बात कर रहा है and जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, and if he is talking about it and you implement the same schedule, it is not important कि you will be able to adjust well with it. You may adjust, but it is not important. So it's just really dependent on you कि how you what you are comfortable with, what suits you the best. Just make your own routines, make your own timetable, make your own schedule, and just get it done. अच्छा, let us go ahead, and since we're pretty much at the end, हम बात करते हैं कि exactly test day के ऊपर क्या होता है. So first of all, it is highly suggested that all the applicants, they go and they either go and see or either map पे they check कि exactly उनका test center क्या है. कराची में usually the test happens in the sports center in the university, वरना from last year I've heard कि they have been taking booking halls outside in Karachi. It's the same in the rest of Pakistan. काफ़ी सारे शहरों में test centers बनते हैं in different शादी halls and marquees, and you go and give the test. आइडियली आपको टाइम से पहले पहुंचना होता है. इसी तरीके से जो है वो सेम डे पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी टेस्ट हो रहे होते हैं. सो समटाइम्स इट्स डिफरेंट टाइमिंग्स की वजह से, बिकॉज टाइमिंग्स काफ़ी आगे पीछे होते रहते हैं, बट जनरली इट्स द सेम टेस्ट, जनरली इट हैपन्स ऑन द सेम डे, एंड यू गो एंड यू इंटरनेशनल में इसी तरह ही सेंटर्स बनते हैं. इट्स जनरली वहाँ पे अटेंडेंस काफ़ी कम होती है, बट you'll still find it exactly the same as what happens in Pakistan. You go to the center, आप आइडियली थोड़ा पहले पहुँच जाएं. You go in, आपको जो है वो स्टेशनरी प्रोवाइड की जाती है, वाटर प्रोवाइड किया जाता है, तो आपकी अपनी जो चीज़ें हैं इंक्लूडिंग योर मोबाइल फ़ोन, विच यू शुडंट टेक अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, कि आपने अपने आने जाने की कोऑर्डिनेशन जो है वो किसी के साथ करनी है, तो वो आपको ब्राउन एनवेलप्स देते हैं जिसके अंदर वो हर आप जो बाहर से सामान लाते हैं वो पैक करके आपके टेबल के नीचे रखवा देते हैं. तो देन यू यूज़ देयर स्टेशनरी एंड एवरीथिंग दैट इज़ प्रोवाइडेड, एंड यू अटेम्प्ट द टेस्ट. एंड टेस्ट के बाद कोई 10 से 15 मिनट देयर इज़ अ बफर टाइम जिसमें यू कम आउट, एंड फिर अगर आपने खुद वापस जाना है, जो भी आपको लेने आता है, यू कैन गिव देम दैट टाइम, एंड देन यू गो बैक. सो दैट बीइंग सेड, मेक श्योर दैट यू डू नॉट इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर द टेस्ट, क्योंकि या तो कुछ लोग डिप्रेस्ड होते हैं या कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं. तो डोंट गिव योर सेल्फ दैट टॉर्चर एंड स्ट्रेस. Go back to your home, and after a very short rest, switch swiftly to your NMDCAT preparation. So on that note, let's go ahead and let's see what last minute tips and advices you guys have for the applicants. Why don't you go ahead, Vikash, and then we'll move on to Tushar. Right, so Abdullah, I would just say stay consistent with your prep and practice a lot, because practicing is what will help you retain information. And just go in with a plan or execute karo bas. And I hope everybody does well on the exam. Yeah. All right, and Tushar, anything that you have in mind? We've said already pretty much everything, but anything that you have in your mind for the applicants? Alright, so as we all know, you have almost about 15 days left, and I would just say कि आखिरी के 15 दिन effectively use करो. And ये नहीं कि everything ends with the AQ test. उसके बाद you have your NMDCAT test as well.
So I would say, as also Abdullah also mentioned, कि swiftly move towards your NMDCAT prep and just don't lose focus and don't forget your goal, right? And Abdullah and me and our whole batch is actually waiting for you next year at AKU. And if you ever see me at AKU, just come up to me and offer me a donut. Offer us a donut. All of us, actually. We love donuts at AKU and anything else that you want to bring for us. Nick, but on a very serious note, I believe that this is the time when you can finally make your last final leap and put all your effort in while also maintaining a happy and sound state of your mind. Thank you so much, everyone, for tuning in into MedAngle's podcast. Please do go down there in the comments and let us know what part of the podcast was your favorite and what other topics would you like us to have conversations on the channel, any specific guests that you would like us to invite over to the channel and converse with you guys, and we would love to make content on that. Please do also mention all questions and queries that you have down in the comments below, and also go ahead and check out all of our Instagram handles in the description. You will also find links to the platform itself and a free AKU mock tests that we have, along with free group counseling sessions that we have, where you can go and converse straight 2 hours with top-notch medical university students, and with a very strong follow-up program as well. So thank you so much for tuning into the podcast. If you want more content on the AKU test specifically, make sure to go down below and check our blog post on the AKU test, which has a lot of perspectives by a lot of AKU students themselves. That being said, make sure you go down below, hit the subscribe button, ring the bell icon, and also give us a big thumbs up. We'll see you guys soon, very soon in fact. Until then, take care and Allah Hafiz.